Page number? And page number 66. So this explains from there. This explains why habit is so powerful. Page number 56. 66. Huh? 66. Yes, ma'am. From this explains why habits are so powerful. Okay, monkey वाला experiment चल रहा था क्या? Yes, ma'am. This explains. Monkey's experiment is already done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो क्या देखे हम लोग, क्या experiment किया गया? Who will describe? उसकी ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था. ठीक है. ब्लैकबेरी का उसको जूस दिया जाता था, उसके कारण उसका बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाता था ब्रेन में. नहीं, और थोड़ा चाहिए. मेन देखिए प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, वो आप कैच कर पाएंगे नहीं. Anyone? If you want to express, raise your hand. Raise your hand. Shocking, no one. And Pallavi, Pratyush, और इसका तो ऑडियो कनेक्ट नहीं है, रिमूव कर दूं मैं. और पल्लवी आप, क्या एज है आपका कि मैं डांटू हर चीज के लिए? पल्लवी स्विच ऑन कर रहे हैं, यस और नो, अदरवाइज रिमूव करना लास्ट ऑप्शन है मेरे पास. 2 minutes, फाइन. ओके, वापस से मेरे कैप करवा रही हूँ. मंकी पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो मेन यहाँ पे क्या चेक करना था, आपने देखा कि फेब्रिज मार्केट में उतरा और टेस्ट में भी देखा गया कि वो लोग चाह रहे थे उस प्रोडक्ट को, बट जब एक्चुअल मार्केट में जब उतारा गया, मतलब टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव रिजल्ट था, लेकिन जब मार्केट में उतारा गया तो आपने देखा वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था. सारा प्रोडक्ट एज इट इज सेल्फ पे था. यस, इफ यू रिमेम्बर. तो ये चीज चेक करने के लिए रिसर्चर को भेजा गया कि आखिर क्या रीजन है. तो रिसर्च करने वाले का नाम यहाँ पे क्या है? स्कल्ज. ठीक है, उम्मीद तो नहीं कि आप लोग को याद होगा. स्कल्ज नाम है. ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा इन्होंने देखा कि अगर मेरे को कोई स्टैंड वगैरह रिमूव करना होगा तो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल टेक वेट टॉवेल और समथिंग और टिश्यू एंड आई विल वाइप इट हार्ड. ठीक है, अगर मेरे को कोई स्टेन अगर रिमूव करना होगा तो हम यही करेंगे. यस, और यहाँ पे यही चीज चेक करने के लिए कि हम किसी भी जन में कोई नया हैबिट हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं. यस, वो चीज चेक करने के लिए मंकी पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. फाइन. वहां पे ब्रेन में इलेक्ट्रोड वगैरह, थिन इलेक्ट्रोड आपने देखा कि इंसर्ट किया गया था ब्रेन में, ताकि पता चले कि कैसे न्यूरोनल एक्टिविटी हो रहा है उस मंकी की ब्रेन में. तो आपने देखा जब वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो एक डिम लाइट रूम में उनको बैठाया, ये जूलियो नाम का ये मंकी है ना, जूलियो को बैठाया गया. स्क्रीन पे डिफरेंट शेप्स वगैरह डिस्प्ले किया गया. ठीक है, और ऑब्वियसली मंकी क्या कोई और को भी बैठाइए, सब लोग लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे. तो इसको इंटरेस्ट कैसे दिलाया गया, जैसे वो लिवर, वो शेप, जो शेप वो देखते के साथ वो लिवर जब पुल करता था तो ब्लैकबेरी का जूस उसके लिप पे जाता था. ठीक है, अब ये इंटरेस्ट लेना शुरू किया ग्रेजुअली. पहले बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद जैसे उसको ब्लैकबेरी जूस मिलना शुरू हुआ, इंटरेस्टेड हो गया. अब इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा ट्विस्ट किया. ठीक है, ट्विस्ट क्या हुआ, पहले लीवर प्रेस करने पे, अच्छा ये वाला भी हम लोगों ने देखा कि पहले रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता था. तो ये जो हाइक आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, able to see the graph? Yes, ma'am. Yes, ये स्पाइक देख रहे हैं, ये स्पाइक कब आए, ब्रेन कब रिस्पॉन्ड किया, जब उसको रिवॉर्ड मिल गया, यानी जब उसको ब्लैकबेरी जूस मिल गया तब ये रिस्पॉन्ड किया. और फिर जब ये रेगुलर करवाया गया तो आप देख रहे हैं ये रिस्पॉन्स मिलने से, मतलब रिवॉर्ड मिलने से पहले ही उसका ब्रेन एंटिसिपेट करने लगा रिवॉर्ड को. तो जैसे शेप देखा वो स्क्रीन पे, एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया. और लीवर बाद में प्रेस किया और जूस भी बाद में मिला, बट ब्रेन एंटिसिपेशन स्टार्टेड अर्लियर. यस, यहां तक हम लोग कर लिए थे. इसके बाद आप और यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे फिर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अल्टर किया गया, थोड़ा चेंज किया गया. क्या चेंजेस लाए इसमें, आप देख रहे थे कि पहले ब्लैकबेरी जूस मिल रहा था. अब इन लोगों ने क्या किया कि अब जब शेप आता था, वो लीवर वो पुल करता था, तो अब उसको ब्लैकबेरी जूस नहीं मिलने लगा, या फिर लेट से मिलता था, या फिर खराब टेस्ट का मिलता था. ठीक है,
तो अब उसका मंकी का क्या रिएक्शन था, वो इरिटेट होना शुरू हुआ, वो गुस्सा दिखाना शुरू किया। ठीक है, अब ये चेक करना था कि क्या हम इस एक्सपेरिमेंट से वो नया हैबिट, ब्लैकबेरी जूस का जो हैबिट है, वो हम इनकलकेट कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, ब्लैकबेरी जूस का नहीं, इसका जो लिवर शेप दे करके जो लिवर पुल करता था, उसका हम वो हैबिट इनकलकेट कर पाए कि नहीं। अब वो चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी खोल दिया कि ठीक है, अगर आप बाकी मंकी के साथ आप चले जाइए, तो अगर मंकी में क्रेविंग हो चुका है, ठीक है, उस चीज का, ब्लैकबेरी जूस का अगर क्रेविंग हो चुका है, तो वो मंकी वहीं पे रुका रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो वापस से लिवर पुल करता रहेगा जब तक कि उसको वापस से ब्लैकबेरी जूस ना मिल जाए। यस, और जिस मंकी में क्रेविंग नहीं शुरू हुआ है, वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा और कभी लेबोरेटरी में पीछे मुड़ के वो देखेगा नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जो जिस मंकी में क्रेविंग हो चुका था, दे स्टेड ग्लूड इन देयर स्क्रीन द सेम वे अ गैम्बलर विल प्ले स्लॉट्स लॉन्ग आफ्टर ही लॉस्ट हिज विनिंग। मतलब एक बार जो गैम्बलर है वो कैसे खेलते हैं, चलो एक बार हार गए, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करते हैं, सेम वे ही विल ट्राई। यस, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। जिनको क्रेविंग हो चुका था वो दे स्टेड एज इट इज, और जिनमें क्रेविंग नहीं हुआ था वो बाहर जा चुके थे लेबोरेटरी में। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से आज आप लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, फ्रॉम हियर विभा, आई वांट यू टू स्टार्ट। दिस एक्सप्लेन्स। Okay, ma'am. This explains why habits are so powerful. They create neurological cravings most of the time. These cravings emerge so gradually that we were not really aware they exist. So we are often blind to their influence. But as we associate cues, as we associate cues with certain rewards, a subconscious cravings emerge in our brains that starts the habits loop spinning. One habit loop spinning. One researcher at Cornell, for instance, found how powerfully food and scant cravings can scent, perfume, smell, खुशबू. scent cravings can affect behavior when we noticed how Canavan stores we were positioned inside shopping malls. Most food sellers locate their kiosks in food courts, but Canavan tries to locate their stores away from other food stalls. Why? Because Canavan executives want with the smell of इसको फिर से Canavan पढ़िए. Executives want the smell of cinnamon rolls to waft down hallways and around corners. Uninterrupted so that shoppers will
start subconsciously cravings a role. By the time a consumer turns a corner and sees the Cannabon store, that cravings is a roaring monster inside his head, and hell reach unthinkingly for his wallet. The habit loop is spinning because a sense of craving has emerged. Okay, from here, There, Pallavi Kumari. Vibha, you are not practicing that means. प्रैक्टिस किए थे घर पे? मैम मेरा तबीयत खराब हो गया. Okay, Pallavi, start. Yes, ma'am. There's ma'am, there is nothing else. There is nothing program it into our brain that makes you see a box of tokens and automatically want a great आप पढ़ भी रहे हैं क्या? Leave it. Vishal, read out from here. There is nothing programmed into our brain. यहाँ दिख रहा है? Cursor moving. Yes, ma'am. Read from here. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Okay, ma'am. DS, ma'am. No? हाँ. Their program in I can't hear you. अभिषेक यादव. यस मैम. अच्छा, आप तो पढ़ चुके हैं? नो मैम, अभी तो इस क्लास में नहीं पढ़े हैं, पहले पढ़े थे. हाँ, मतलब पहले आप पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी. यस मैम. Let me check. Shreya, turn on your camera. अच्छा, तब तो वही लोग बचे हुए हैं जो रेगुलर हैं. चलिए, आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं. आदित्य से ना शुरू करिए. And those who want to improve, please do practice. अभी जो रीडिंग था, it was not of PGDM level. आदित्य शुरू करिए. There is nothing programmed into our brains that makes us see a box of donuts. विशाल रहने दीजिए, आवाज नहीं है क्लियरिटी आपकी. आदित्य को पढ़ने दीजिए. Donuts and automatically want a sugary treat. Schultz told me, but once our brain learns that a donut's box contains yummy sugar and other carbohydrates,
it will start anticipating the sugar high. Our brains will push us toward the box. Then if we don't eat donuts, we'll feel disappointed. To understand this process, consider how Giulio's habit emerged. First, he saw a shape on the screen. Over time, Giulio learned that the appearance of the shape meant it was time to execute a routine, so he touched the lever. As a result, Giulio received a drop of blackberry juice. That's basic learning. The habit only emerges once Giulio begins craving the juice when he sees the cue. Once that craving exists, Giulio will act automatically. He'll follow the habit. This is how new habits are created, by putting together a cue, a routine, and a reward, and then cultivating a craving that drives the loop. Take, for instance, smoking. When a smoker sees a cue, say a pack of Marlboros, her brain starts anticipating a hit of nicotine. Just the sight of cigarettes is enough for the brain to crave a nicotinic rush. If it doesn't arrive, the craving grows until the smoker reaches unthinkingly for a Marlboro. Okay, this is how craving works. कि अगर वो ना मिले, लोग disappoint हो जाए, they will not feel better. Same need to be done with Febreze also, जो मार्केट में अब तक ठीक से बूम नहीं कर पाया है, तो यही चीज करना था Febreze के साथ. ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट का मेन जस्ट वही है. ठीक है, ये सब हम करेंगे Febreze के साथ, तभी मार्केट में वो रह पाएगा. फाइन. कभी आपने देखा कैसे निकोटिन रश होता है, उस टाइम में अगर चाहिए तो चाहिए. ठीक है, जो जिनको चाय पीने की लत है, जो स्मोक कर रहे हैं, उनको जिस टाइम में चाहिए तो चाहिए ही होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रेविंग. सेम वे जैसे आप जूलियो के साथ देखे किस तरीके से न्यू हैबिट इमर्ज हुआ. नाउ प्रोसीड पूजा सिन्हा. Yes, ma'am. Or take email. When a computer chimes or a smartphone vibrates with a new message, the brain starts anticipating the momentary distraction that opening an email provides. That expectation, if unsatisfied, can build until a meeting is filed with executives checking their buzzing blackberries under the table, even if they know it's probably only their latest fantasy football result. On the other hand, if someone disables the buzzing and thus removes the cue, people can work for hours without thinking to check their inboxes. Scientists have studied the brain of alcoholics, smokers, and overeaters, and have measured how their neurology, the structures of their brains, and the flow of neurochemicals inside their skulls changes as their cravings become ingrained. Particularly strong habits, wrote two researchers at the University of Michigan, produce addiction like. Ma'am, क्या बोली? Michigan is the name of the place, University of Michigan. Michigan produce addiction like reaction, so that wanting involves into obsessive craving that can force our brains into autopilot even in the face of a strong disincentives, including loss of reputation, job, home, and family. However, these cravings do not have complete authority over us. As the next chapter explains, there are mechanisms that can help us ignore the temptation, but to overpower the habit, we must recognize which craving is driving the behavior. If we are not conscious of the anticipation,
then we are like the shopper who wander as if drawn by an unseen force into Cinnabon. To understand the power of craving in creating habits, consider how exercise habits emerge in Priya, 2000. wait, pause, Sonal Priya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is another next experiment done. Yes, to understand the power of craving in creating habit, considered how exercise habit emerged. In 2002, researcher at New Mexico State University wanted to understand why people habitually exercise. They studied 266 individuals, most of whom worked out of the least 3 times a week. What they found was uh, what they found was that many of them had started running or lifting weight almost on a whim, or because they suddenly had free time or wanted to deal with unexpected stress in their lives. However, the reason they couldn't they continue why it became a habit, because of a specific reward they started crave. in uh, in one group, 92% of people in one group 92% of people said they habitually exercised because it made them feel good. They grew to expect and crave at sorry Endorphin. endos endorphin and other new chemical a workout provided. Uh, in in another group, 67% of people said that working gave them a sense of accomplishment. They they had come to crave a regular sense of trim, uh, trim. What is this, ma'am? Miss Victory. Yes, ma'am. Victory. Trigonometry and trigonometry from tracking their performance, and that self reward was enough to make the physical activity into a habit. If you want to start running each morning, it's essential that you choose a simple clue cue, like always lacing up your sneakers uh, before breakfasting, leaving your running clothes next to your bed, and uh, a clear reward such as a meditate and ठीक से देखिए. midday treat. Midday treat and midday treat, a sense of accomplishment from recording your miles, or the endorphin rush you get uh, from a jog. But countless studies have shown that a cue a reward and a reward on their own aren't enough for new habit last. Only when your brain starts expecting a reward, craving the endorphin or a sense of accomplishment with it become and automatically lace up your jogging shoes each morning. The cue, in addition of trig- trig- triggering addition to triggering a routine
must also trigger a craving for the reward to come. Let me ask you about let me ask you about a problem I have. Uh, um, I said to Wolfram Schultz, ये तो रिसर्चर है, इसको जॉब तक करते आ रहे हैं सारा एक्सपेरिमेंट. Wolfram Schultz, the neurologist, after he explained to me how craving emerged. Uh, I have a 2 years old and when I am from I when I am feeding from him dinner, chicken nuggets and stuff like that, I'll reach over and eat myself without thinking about it. It's a habit, and now I am gaining weight. Everybody does that. Is Schultz said. He has 3 children of his own. All are adult now. When they are young, he would pick at their dinners unthinkingly. Uh, in some ways, he told me where we have like told me where we have like the monkeys. When we see chicken or fries on the table, our brain begin anticipating antici- anticipating the food. Anticipating the food, even if I am not hungry, our brain are craving them. Frankly, I don't even like this kind of food, but suddenly it's hard to fight the urge, urge, and has soon and has a अब तक आपने देखा किस किस चीज का क्रेविंग होना शुरू हो जाता है. एक कभी आप स्वीट्स पे एक्सपेरिमेंट देखे, ठीक है, अगर फिर आप जिनको फ्राइज और चिकन वगैरह पसंद है वो एक्सपेरिमेंट देखे, जिनको रनिंग का क्रेविंग है या एक्सरसाइज का क्रेविंग है, वो जो रश ऑफ एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो आप एक्सरसाइज करने के बाद आप फील करेंगे, ठीक है, तो उस चीज का क्रेविंग हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करना या फिर वॉक करना या फिर जॉग करना आपको पसंद होगा, ठीक है. या फिर एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट की यस आई डिड, मान लीजिए 5 किलोमीटर चल रही है, 1 किलोमीटर चल रही है, दैट फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, आज मेरा टारगेट है 1 किलोमीटर चलना, कर लिए, दैट फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, जिसकी वजह से किसी के अंदर एक क्रेविंग क्रिएट हो पाता है, ठीक है. प्रोसीड अदिति कुमारी. Yes, I should be thankful, he said, because the same process has let me create good habits. I work hard because I expect pride from a discovery. I exercise because I expect feeling good afterward. I just wish I could pick the choices better. ओके, और अब है ये नेक्स्ट बात हो रही है अगेन आगे वापस के हम लोग फेब्रिक्स के ऊपर. यस, वापस आ गए हम लोग फेब्रिक्स के ऊपर. रिसर्च इज डन. अब प्रत्युष. हाँ, Yes, ma'am. स्टार्ट. After their distraught interview with the Catwoman, Dark Stimson's कैट team वुमन का क्या एक्सपेरिमेंट था, सॉरी क्या टेस्ट था, याद है? इंटरव्यू विद द कैट वुमन. इस एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने का रीजन क्या था? एक्चुअल तो कैट वुमन की वजह से ही हुआ नहीं ना. लगता था मैम. स्मेल नहीं लगता था. कितनी कैट थी उसके घर में? 5. 9 कैट्स थी, और 9 कैट घर में रहते हुए उसको कभी स्मेल लगा ही नहीं. यस,
तो वही उस टाइम ये सबसे डिजास्टरस इंटरव्यू क्यों बोला गया कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है वही फेब्रिज नहीं खरीद रहा है, उसको रिवॉर्ड का कोई कदर नहीं है। तो जब हम इसको नहीं सेल कर पा रहे हैं तो फिर हम किसको सेल कर पाएंगे? ठीक है, जिसके बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया गया। फाइन। तो अब यहाँ पे शुरू हो रहा है डिजास्टर इंटरव्यू के बाद फिर क्या हो रहा है, आगे बढ़िए। Rex Stimson's team at P&G started looking outside the usual channels for help. They began reading upon experiments such as those conducted by Wolfram Sulge. This asked a Harvard Business School professor to conduct psychological tests of Faberge's ad campaign. They interviewed customer after customer, looking for something that would give them a clue how to make Faberge a regular part of consumers' lives. One day, they want to speak with a woman in a suburb near Scottsdale. She was in her 40s with 4 kids. Her house was clean but not compulsively tidy. To the surprise of the researchers, she loved Faberge. I use it every day, she told them. Theodore Stimson said the house did not seem like the kid of place with smelly problems. There were not any pets. No one smoked. How? What smells are you trying to get rid of? I don't really use it for specific smells. The woman said, I mean, you know, I have got boys. They are doing through puberty, and if I don't clean their rooms, it smells like a locker, but I don't really use it that way. I use it for normal cleaning. A couple of sprays when I'm done in a room. It's a nice way to make everything smell good as a final touch. They asked if they could watch her clean the house in the bedroom. She made her bed, plumbed the pillows, tightened the seats corners, and then took a Febreze bottle and sprayed the smooth comforter in the living room. She vacuumed, picked up the kids' shoes, straightened the coffee table, and sprayed Febreze on the flashy, cleaned carpet. It's nice to know, she said. Spraying feels like a little mini celebration when I'm done with a room. At the rate she was using Febreze, Stimson estimated she would empty a bottle every 2 weeks. ओके फाइन, यहाँ तक का क्या समझे आप? ये आगे नेक्स्ट रिसर्च है या नेक्स्ट इंटरव्यू है ये वुमेन इन सबर्ब, इस पे अब ये क्या समझे आप? एनीवन कैन से? You have understood? Respond. I want you to infer. मैम इसमें एक न्यू लेडी से ये इंटरव्यू लिया जा रहा है कि वो जो पीएनजी प्रोडक्ट बनाई है वो यूज कर रही है और वो उसका उनके पास कैसा ये है फीडबैक। ओके, हाँ तो बताइए क्या था फीडबैक, यहाँ पे क्या कह रही है वो? फीडबैक मैम ये था कि अच्छा है, मतलब उनका रूम वगैरह जो उनका घर है वो बैड स्मेल नहीं कर रहा है, सही से चल रहा है वो काम। ये कहना था कि ये बिना फेब्रिज के उसका काम चलता ही नहीं है, वो डेली क्लीनिंग में वो यूज करती है। ठीक है, वो यहाँ पे आप ये लाइन देखिए, द हाउस डिडंट सीम लाइक द काइंड ऑफ प्लेस वेयर स्मेली प्रॉब्लम का तो ये नहीं था, इशू नहीं था, बट किधर इस आसपास यहाँ देखिए, इट स्मेल लाइक अ लॉकर, यहाँ दिख रहा है ये लाइन। ठीक है, इसी चीज को मतलब वो छुटकारा पाने के लिए वो डेली यूज करती थी फेब्रिज। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे क्या, हम आपको देख सकते हैं कैसे क्लीनिंग करते हैं आप?
ये सारा प्रोसेस करके दिखाती है और लास्ट में जब सफाई हो जाती है तब ये फेब्रिज को स्प्रे करती है, तब फील होता है उसको सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और आपने देखा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 2 वीक में कितना बॉटल वो एम्प्टी कर चुकी होती है। एट द रेट शी वाज यूजिंग फेब्रिज, स्टिम्सन एस्टिमेटेड शुड एम्प्टी अ बॉटल एवरी 2 वीक। एक क्या 2 वीक में एक बॉटल उसका खाली हो चुका होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका PNG had collected thousands of hours of video tapes। ये लोग सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि लोग यूज कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़िए आकृति। PNG had collected thousands of hours of videotapes of people cleaning their homes over the years. When the researchers got back to Cincinnati, some of them spent an evening looking through the tapes. The next morning, one of the scientists asked the February's team to join him in the conference room. He queued up the tape of one woman, a 26-year-old with 3 children, making a bed. She smoothed the sheets and adjusted her pillow. Then she smiled and left the room. Did you see that? The researcher asked excitedly. He put on another clip. A younger brunette woman spread out a colorful bedspread, straightened a pillow, and then smiled at her handiwork. There it is again, the researcher said. The next clip showed a woman in workout clothes tidying her kitchen and wiping the counter before easing into a relaxing stretch. The researcher looked at his colleagues. Do you see it? He asked. Each of them is doing something relaxing or happy when they finish cleaning, he said. We can build off that. What if February's was something that happened at the end of the cleaning routine rather than the beginning? What if it was the fun part of making something cleaner? Stimson's team ran one more test. Previously, the product's advertising had focused on eliminating bad smells. The company printed up new labels that showed up open windows and gusts of fresh air. More perfume was added to the recipe so that instead of merely neutralizing odors, Febreze had its own distinct scent. Television commercial were filled of women spraying freshly made beds and spritzing just laundered clothes. The tagline had been "Gets bad smell out of fabrics." It was rewritten as "Cleans life smells." Each ठीक change है, तो was ये सारा, हाँ, सारा चेंजेस फेब्रिक्स का देखिए क्या क्या चेंज किया गया। एक तो टैगलाइन तो चेंज हुआ ही हुआ, प्लस उसके इंग्रेडिएंट में उसका अपना आपने देखा कोई स्मेल नहीं था, यहाँ पे अब स्मेल ऐड किया गया। मोर परफ्यूम वाज एडेड टू द रेसिपी। ठीक है, और प्लस हम लोग पहले क्या था कि वो जब बैड स्मेल होता है तब इरेडिकेट करेंगे, तब खत्म करेंगे। यस, आपने पहले देखा। अब क्या किया, इसको रिप्लेस किया गया डेली यूज में। ठीक है, जब तक आप साफ सफाई करने के बाद आप डेली इसको यूज करिए। ठीक है, these were the changes and proceed and see what happened to this then. Abhishek change Yadav, was Abhishek Yadav, Yes, ma'am. पढ़िए। Each change was designed to appeal to a specific daily cue: cleaning a room, making a bed, vacuuming a rug. In each one, February's was positioned as the reward. The nice smell that occurs at the end of a cleaning routine. Most important, each ad was calibrated to elect covering that things will smell as nice as they look when the cleaning ritual Ritual is done. ritual is done. The irony is that a product manufactured to destroy odor was transferred into a opposite तो हम instead order of ही पढ़ेंगे। Order means smell. We order. destroy odor. Okay, ma'am. Eliminating scents on a dirty fabric, it become an air freshener used as एक the तो पढ़े थे air freshener. freshener used as the finishing touch once things are already clean. When the researcher want
back into consumer homes after the new ads aired and Fine. redesigned. We are running out of time. यहाँ पे देखिए, जब ये सारा चेंजेस लाने के बाद इन्होंने देखा कि क्या अब मार्केट में वर्क कर रहा है ये, तो आप ये देख रहे हैं कि क्रेविंग क्रिएट करना था, ठीक है, डेली हैबिट में लाने के लिए। तो क्या लोगों के अंदर ये फेवरेट्स के सेंट का क्रेविंग इमर्ज हुआ? तो एक वुमेन बोलती है कि ये जब तक हम यूज नहीं करते हैं, शी स्क्विटेड डाइल्यूटेड परफ्यूम ऑन हर लॉन्ड्री। कहने का मतलब स्क्विटेड मतलब क्या, याद है जब हम टूथपेस्ट वगैरह खत्म हो जाता है तो एकदम खत्म होने के बाद भी हम एकदम लास्ट तक प्रेस करते हैं, काट करके निकालते हैं कि हाँ जितना भी बचा कुछ है वो भी हम निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे स्क्विटेड डाइल्यूटेड परफ्यूम मतलब क्या, आई एम फोर्सिंग इट आउट, कि खत्म होने के बाद भी हम कोशिश करते हैं पूरा निकले, तब फिर दूसरा बॉटल यूज करते हैं। तो इस तरीके का क्रेविंग लोगों में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ऑब्वियसली मार्केट में पॉजिटिव रिजल्ट है, और अब इसका सेल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। 1998 तक में रीलॉन्च हुआ है, और विद इन 2 मंथ सेल डबल। विद इन अ ईयर कस्टमर हैड स्पेंड मोर देन 230 बिलियन ऑन अ प्रोडक्ट। इसके अलावा ये स्पिन ऑफ किया, यानी बहुत सारा और प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। कहाँ पहले सिर्फ एयर फ्रेशनर था, अब एयर फ्रेशनर के साथ कैंडल्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, किचन स्प्रे, ये सारा चीज मार्केट में आ चुका है इस फेब्रिक्स के नाम पे, ठीक है। और ये सारा का मेन पर्पस है टू किल बैड ऑर्डर, चाहे आप लॉन्ड्री में यूज करें, चाहे किचन में यूज करें, चाहे कैंडल्स यूज करें, ये सब खुशबू वाला था, ठीक है। तो स्टिमसन फाइनली जो उसका मेन टारगेट था बोनस कमाना, वो हो चुका। इस तरीके से ये प्रोडक्ट मार्केट में अपना प्लेस बना पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, हाउ दे क्रिएटेड न्यू हैबिट, जस्ट बाय द हेल्प ऑफ दैट क्रेविंग, ठीक है। वो स्मेल का क्रेविंग लोगों में क्रिएट किया, तब वो मार्केट में सक्सेसफुल हो पाया। तो ये था आपका फिब्रिस का। ऑब्वियसली अब यहाँ से हम लोग कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में 5, और ये याद रखेगी सोनल प्रिया, रिमाइंड मी नेक्स्ट क्लास, पेज नंबर 76, ऑलराइट। और मैं तुरंत रिकैप, आपका जो प्रीव्यू है वो सब मैं बता देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, घर पे पढ़िए, थोड़ा रीड आउट करिए। विशाल कुमार, यस मैम। चेक योर ऑडियो, आवाज आ रही है उधर से? यस मैम। जब बोलना नहीं होता है तो म्यूट करके रखा करिए। Today is 5th. Roll 1, Present, ma'am. 2, 3, 4, 5, 6, 6 present, ma'am. 7, 8, 9, ma'am. 9 present, ma'am. 10, 11, 11 present, ma'am. 13, 14, Yes, ma'am. 15, 16, 17, Present, ma'am. 18, 19, 20, Yes, ma'am. 21, 22, 23, 24, 25, 26, Yes ma'am, 26. 27, 28, 29, 30, 31, Yes, ma'am. 32. Okay? Yes, ma'am. All right. Thank you. See you next class. Thank you, ma'am. Thank you. You, ma'am.